ठीक है, conic section. In this chapter, Gun, we have 4 topics: circle, parabola, ellipse, and hyperbola. ठीक है, and we have already completed the 3 topics: circle, parabola, and ellipse. Today we have to start the hyperbola. Okay, sir. So please write the definition. Hyperbola is the set of all the points whose difference of distance from two fixed point is always a constant. Pratham, what is the difference between hyperbola and ellipse? Definition में क्या difference है? जी Pratham, what's the difference in the definition of hyperbola and ellipse? वहां सम था. ओके सर. यहाँ डिफरेंस. Ellipse की definition क्या थी? Set of all the points whose sum of distance from two fixed point is always a constant. ओके सर. यहाँ difference है. So Gun, suppose we have taken this point, let this be A. फिर हमने distance calculate किया AF1 and suppose हमने ये distance calculate किया AF2, हमने find किया AF2 minus AF1, तो ये suppose you get 10. Now suppose हमने एक और point select किया B और C और हमने ये find किया, this is CF2 minus CF1, so वो भी 10 होना चाहिए. Suppose हमने एक और point select किया, let this be D, this is DF2 minus DF1, ये भी 10. ठीक है, so hyperbola क्या होता है? It is a set of all the points whose difference of distance from two fixed point is always a constant. It's mean हम point select करेंगे जिनका difference of distance from two fixed point ये हमेशा constant होगा. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे देन वी विल गेट दिस फिगर. ठीक, सो प्रॉपर्टी क्या होगी? इन दिस फिगर अगर आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट और आप उसको सबट्रैक्ट करते हैं, देन दैट डिफरेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. कौन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, सपोज आपने यहाँ पॉइंट लिया जी, आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया जी F1 and जी F2, you will also get it. So this is a property कि अगर आप हाइपरबोला में कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और उसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, देन दिस विल ऑलवेज अ कांस्टेंट. अगर ये 10 आ रहा है तो कंप्लीट 10 है. ठीक है, सो गुड, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? यहाँ तक क्लियर हुआ हाइपरबोला होता है? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज
नेक्स्ट फिर हम कुछ और डेफिनेशंस करते हैं. फॉर एग्जांपल दीज टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकस. नेक्स्ट इज, ठीक है, दिस इज एक्चुअली a plural of focus. The two fixed points, the two fixed points are called the key of the hyperbola. ठीक है. So हमने definition की that the difference of distance is constant from two fixed point. These two fixed points are called the focus of the hyperbola. ठीक है. So दो fixed points हैं आपके पास. So this is called the foci of the hyperbola. This is actually a plural of focus. Next, प्रथम आपके लिए easy होगा next terms को समझना. So next is center, क्योंकि आप इसको correlate कर सकते हैं with the ellipse. So Pratham, what was Yes. the center in the ellipse? Ellipse Uh, में so 0, 0 zero midpoint. midpoint. So center will be defined as the midpoint of the line segment joining the foci is called the center. ठीक है. हाँ, so these are the two fixed points. सुगुन, अगर आप इनको join करते हैं then this line will form, और उसका जो midpoint होगा, that midpoint is the center of the hyperbola. ठीक है. So in this case हम center लेंगे on the at the origin. ठीक है. युवराज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपने, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ. हाइपरबोला, युवराज क्या होता है? युवराज एलिप्स क्या था? Sir, ellipse, sir, definition. जी युवराज, डेफिनेशन. Sir, it is a set of all the points where the sum of distance from two fixed points is always constant. So hyperbola क्या होगा? Here the difference of distance from two fixed point is always a constant. क्लियर हुआ? ये डिफरेंस होगा बिटवीन द हाइपरबोला एंड द एलिप्स. एलिप्स में सम था, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा. Okay. ठीक है. युवराज, अगर हमने सपोज यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट दिस बी ए, और आपने फाइंड किया AF2, आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया AF2, Yes. और आपने कैलकुलेट किया AF1, और आपने उसको सबट्रैक्ट किया, सपोज यू गेट 8. अगर आपने एक और पॉइंट सेलेक्ट किया ऑन दिस हाइपरबोला, ठीक है, लेट दिस बी C, आपने फाइंड किया CF2 माइनस CF1, तो वो भी 8 ही होगा. ठीक है. तो वहां जैसे सम कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट. Okay, sir. ठीक. Sir, 1 minute note कर लिया. जी जी, प्लीज नोट कीजिए. युवराज हो गया कंप्लीट? 1 minute, sir. ओके.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी युवराज। सर ये जो दो कर्व्स हैं, हम्म इसका हमने फोकस से हमने इसके मिड पॉइंट लिया है लाइन सेगमेंट का। हाँ तो ये अगर हम इसका वर्टेक्स देखें तो अगर दोनों वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट ले तो भी तो वही आएगा ना सेम। अगर हम वर्टिसेस का मिड पॉइंट लेते हैं जी इस केस में आएगा, बट हमारी जो डेफिनेशन है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेंटर की, वो हमारी ड्राइव होती है फोकस से। ठीक है, जैसे हमने एलिप्स में भी बात की थी तो हमने फोकस से ही लिया था। हाँ जी सर। ठीक? डन सर। ठीक है। ठीक है, सो हमने फोकस देखा, हमने फिर ये सेंटर देखा। नाउ प्रथम इन एलिप्स व्हाट वाज द वर्टिसेस। वर्टिसेस को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे? अच्छा बिफोर वर्टेक्स रुक जाइए प्लीज प्लीज। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, फिर वहां से हम वर्टेक्स डिफाइन कर देंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है? द लाइन which passes through the of the ellipse is called the transverse axis. ठीक है, so the line which passes through the focus, यानी ये जो लाइन पास हो रही है, this is called the transverse axis. Transverse axis. Next सर ऑफ द एलिप्स, sorry, the hyperbola. Next we have a conjugate axis. So conjugate axis is what? The line which passes the line which is perpendicular to the transverse axis and passes through the center is called conjugate axis. ठीक है, so what is conjugate axis? The line which is perpendicular to this transverse axis and passes through the center. It's mean this is the conjugate axis. ठीक, so ये points clear हो गए. Transverse axis क्या होगी? The line which passes through the focus. Conjugate axis which passes through the center and perpendicular to this transverse axis. Please note down this. और गुण, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। सर अगर F1 और F2 ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो सेंटर तब भी ओरिजिन पे होगा? नहीं, सेंटर डिपेंड करेगा फोकस के ऊपर। ठीक है, सो सपोज ये F1 F2 यहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक, तो सेंटर भी जो होगा वो यहाँ लाई करेगा। फिर क्लियर हुआ? यस सर।
सो दिस इज अ पर्टिकुलर केस जहाँ सेंटर आपका ओरिजिन पे। सो एनसीईआरटी में सिर्फ यही केस है, हम सिर्फ अभी एनसीईआरटी लेवल टच करें। फिर उसके बाद लेवल अगर आप इंक्रीज करते हैं, आपके पास केसेस आते हैं जहाँ पे आपका जो सेंटर होता है ऑफ द हाइपरबोला दिस इज नॉट एट ओरिजिन, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है। ठीक, प्लीज नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। डन सर। ओके, प्रथम एंड गुण हो गया कंप्लीट। Yes, sir. ओके, यस सर। so next is vertices. The point at which the hyperbola cut the transverse axis is called the vertices of the hyperbola. ठीक है, so this is a transverse axis. आपका जो hyperbola है this cut the transverse axis at these 2 points. So this is called the vertices of the hyperbola. नेक्स्ट, ये जो आपका फोकस है इसका कोऑर्डिनेट हमने एलिप्स में कितना लिया था? प्रथम एंड युवराज। फिर -a,0 फोकस सॉरी सर, फोकस तो c,0 +-c,0 प्लस माइनस सी कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम लेंगे। तो मैंने आपसे वहां भी कहा था एलिप्स से कि हाइपरबोलस के जो फॉर्मुलेस हैं वो आप एलिप्स से फाइंड कर सकते हैं। सो एलिप्स में आपने c कॉमा 0 लिया है, -c,0। सिमिलरली फोकस में भी हम, सॉरी हाइपरबोला में भी हम सेम लेते हैं। वर्टेक्स क्या थी वहाँ? सर कौन से एक्सेस के? वर्टेक्स तो same है। वर्टेक्स सर वर्टेक्स हमने ली थी सर याद नहीं, एक मिनट सर। वर्टेक्स तो वर्टेक्स वही नहीं हो जाएगी +-c,0? फिर फोकस क्या है? सर इलिप्स की बात कर रहे हो ना? जी, मैं एलिप्स की बात कर रहा हूँ। सर वर्टेक्स तो हमारी क्या कहते हैं सर, उसके अलोंग भी माइनर एक्सिस के अलोंग भी, मेजर एक्सिस के अलोंग भी है। कौन सी वाली कह रहे हो? नहीं, वर्टेक्स हमेशा एक होती है। ठीक है, जो हमने समरी फॉर्म की थी उसमें चेक कीजिए हमने वर्टेक्स के लिए a,0 होगी। a,0। यस। ठीक है, सो दिस इज -a,0। यस सर सर। तो +-b,a क्या होगा? b,0 युवराज। b,0 सॉरी सर। ये आपका एलिप्स होता है। तो वर्टेक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द पॉइंट एट विच द एलिप्स कट द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जी सर। ठीक है, ये पॉइंट होता है जहाँ पे हाइपरबोला वाई एक्सिस को कट कर रहा है या फिर माइनर एक्सिस को कट कर रहा है, बट ये वर्टेक्स नहीं होता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हाइपरबोला एंड माइनर एक्सिस का।
क्लियर हुआ युवराज? हाँ जी सर. ठीक ठीक. So we have this transverse axis, we have conjugate axis. Okay, so गुण ये क्लियर हुआ. फोकस का हमने जो कोऑर्डिनेट लिए हैं दैट इज c, 0 एंड -c, 0. ठीक है, दिस इज x एंड y एक्सिस. दिस इज द वर्टेक्स. वर्टेक्स के हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं a, 0 एंड -a, 0. गुण क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? No, sir, clear. Okay, so युवराज एंड प्रथम, हमारे पास a, b एंड c था इन द एलिप्स. तो रिलेशन क्या था a, b एंड c में? Sir, a square is equal to b square plus c square. a square is equal to b square plus c square. मैंने वहां बताया था a is greatest. अब Yes. यहाँ अगर हम बात करते हैं then c is greater than a. तो ठीक सर ये हो जाएगा c square is equal to a square plus b square. c square is equal to a square plus b square. ठीक है. So b क्या आएगा यहाँ से? b we will get, just a minute. b we will get b square is equal to a square minus c c square. square. ठीक है. So relation between a, b and c is सर expressed. लेकिन यहाँ पे b प्लेस कहाँ पे होगा? हाँ मैं अभी बता रहा हूँ. रिलेशन बिटवीन a, b and c, it is c square is equal to a square plus b square. तो फॉर एग्जांपल हमें करना क्या है युवराज? उसने हमें दिया c is equal to 5, a is equal to 4. सो हम b फाइंड कर लेंगे. b is equal to 5 square minus 4 square and this is equal to 9 and b is equal to 3. Yes sir. ठीक है. सो हमें ओरिजिन से 3 बस डिस्टेंस लेना है, वहां पे प्लॉट कर देना है b. Okay sir. ठीक. अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है, वी हैव अ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो हम लेंथ फाइंड करेंगे. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. सर बट ट्रांसफर एक्सिस तो लाइक दोनों साइड से एक्सटेंडेबल है, तो वो इन्फिनिटी नहीं होगी? नहीं होती इनफिनाइट, बट इन केस सपोज वो पूछता है अगर डिस्टेंस, हाँ हाँ. ठीक है, देन यूज 2a. एंड सिमिलरली अगर वो पूछता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, देन राइट 2b. मतलब वर्टिस का डबल. जी. ओके सर. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ, अगर उसने लेंथ पूछी है देन यूज दिस conjugate axis is equal to 2b. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, ओके ये था हमारे पास c square is equal to b square plus a square. नेक्स्ट वी हैव eccentricity. eccentricity हमने कैसे डिफाइन किया था एलिप्स में? Sir, it was distance of focus from the center to distance of the vertex from the center. So the c over a था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहते हैं, b over c हो जाएगा सर. नहीं नहीं नहीं, eccentricity always remains c by. ओके. ठीक है. तो जो फॉर्मुलेज एलिप्स में थे सेम फॉर्मुलेज आपके यहाँ भी होंगे. उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of the distance between the center and focus to the distance between the center and vertex. Okay, so remember this formula, E is equal to C by A. What is C? Distance between the center and the focus. What is A? Distance between the center and the vertex. So in this case, C is greater than A.
C is always greater than equal to A. So E जो होगा हमारा that is greater than equal to 1. ठीक. Please note on this. सर इसमें क्या कहते हैं डेफिनेशन तो सेम ही है आई गेस, कोई फर्क तो है नहीं. नहीं युवराज, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर एलिप्स के फॉर्मूलेस लर्न कर लिए तो फिर हाइपरबोला में कोई इशू आता नहीं है आपको. ठीक है, हो गया नोट. शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट? यस सर, हो गया. Yes, sir. So next is lattice rectum. Lattice rectum क्या था? Sir, it was the length of the line passing through the focus perpendicular to the transverse axis and parallel to the y-axis or the conjugate axis. ठीक है, so this is a lattice rectum. Lattice rectum क्या होता है? The line which passes through the focus perpendicular to the transverse axis and touches the hyperbola. So the line which passes through the line which passes through the focus perpendicular to the transverse axis and touches the hyperbola. It's called lattice rectum. ठीक है, so there's a lattice rectum. This line is passing through the focus perpendicular to this transverse axis and touches the hyperbola. So this is called lattice rectum. And length of lattice rectum is ellipse में क्या था प्रथम and युवराज? Sir, सर 2b square by 8 था सर. 2b square by 8. yes sir. तो सेम इसमें भी रहेगा, हाइपरबोला में भी सेम फॉर्मूला. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज दिस. ठीक है, इसको नोट कीजिए. हो गया सर. प्रथम एंड गुण हो गया नोट? Yes sir. Yes, sir. Okay, so next our last topic is equation of transverse axis.
ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन कोई बताएगा? ये एक्स एक्सिस है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? गुण, इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की? जी, युवराज एंड प्रथम, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये हम कर चुके हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ये हमने डिटेल में किया था। बिल्कुल ठीक है युवराज। सो इन दिस केस y इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। Yes, sir. गुण क्लियर है? ये 10th में किया था आपने। यस सर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। अभी एक समरी फॉर्म करते हैं। स्टार्ट करें नेक्स्ट। Yes, sir. सर इसमें भी टाइप्स होते हैं, दो तरीके के हाइपरबोला। इसमें भी टाइप्स होंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है, वहां जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज दिस, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? युवराज, प्रथम एंड गुण, क्लियर हुआ ये? यस सर, सर इक्वेशन तो सेम ही है। लाइक एलिप्स, बस नेगेटिव का डिफरेंस है। जी सर। ठीक है, गुण क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दिस फॉर यस दिस सर। हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट अब एक समरी फॉर्म करते हैं। सर ये वाली तो टाइप ए के लिए होगी ना, अगर टाइप बी होता तो उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बताता हूँ बस आपको। दिस इज टाइप फर्स्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट थिंग हमने यहाँ जो डिस्कस किया था दैट इज फोकस। गुण, इसमें फोकस कितना था? सी। Focus is plus minus c comma 0. What is center? ओरिजिन 0,0. 0 comma 0. What is this? प्लस माइनस a,0. Plus minus a comma 0. Then we have eccentricity. ये कितना C होता है? by a. E is equal to c by a. Next, fifth, we have length of lattice rectum. 2b square by a upon a. 2b square by a. Okay. So for the type first, we have all these points: focus, center, vertices, eccentricity, and the length of lattice rectum. Okay. Then we have an equation. We get the equation of transverse axis. कितनी होती है equation of transverse axis? Y is equal to 0. Y is equal to 0. Next, equation of conjugate axis. X is equal to 0. X is equal to 0. Okay. Next, we have a type second. अब देखिए युवराज, एलिप्स में हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे टाइप को? फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्योंकि वहां पे a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ठीक है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, यहाँ पे सी इज द ग्रेटेस्ट तो। C is greatest. A and B का कुछ फिक्स नहीं होता. Sometimes A can be bigger than B and vice versa. So next हम draw करते हैं type second.
type secant is like this. ठीक है, this is type secant. यहाँ आपका जो इक्वेशन हो जाएगी that is y square by a square minus x square by b square is equal to 1. ठीक है, दिस इज टाइप सेकंड. तो यहाँ क्या होगा कि आपके जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज ऑन वाई एक्सिस. सो आपकी जो डेफिनेशन है वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. लेट दिस बी फोकस f1 एंड दिस इज f2. फर्स्ट हम चेक करते हैं फोकस क्या होगा. ठीक है, डेफिनेशन सेम रहेगी. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. फोकस के कोऑर्डिनेट मुझे कोई बताएगा? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस? सर 0, plus minus c. 0, c 0, माइनस सी. ठीक, तो बस इतना याद रखना है कि हमने यहाँ क्या किया. हमने एक तो y को सिर्फ इंटरचेंज कर दिया. डिनोमिनेटर पहले y का जो था वो b था, अब a हो गया. ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपको फॉर्मूलेस मिलेंगे. सो बेटर है कि फॉर द थ्योरी ऑफ दिस कोनिक सेक्शन रेफर द एनसीईआरटी. आंसर सबके सेम होते हैं, फॉर्मूलेस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो वो कंफ्यूजन हो जाती है. ठीक, इसलिए लर्न दिस फॉर्मूला एंड रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको थ्योरी चेक करनी है. तो फोकस हमारे पास यहाँ हो जाएगा दिस इज 0, प्लस माइनस सी. सेकंड सेंटर क्या होगा? सेंटर इज 0, 0, 0. थर्ड इज वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0, plus minus a. 0, प्लस माइनस ए. So this is 0, plus minus a. This is vertex. Fourth one. नेक्स्ट हमारे पास फिर ये अब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी. And this one will be conjugate axis. This is transverse axis. ठीक है, so equation of transverse axis क्या होगी? So x is equal to 0. X is equal to 0. बिल्कुल ठीक है. Next we have equation of conjugate axis. y is equal to 0. Y is equal to 0. Sixth one. उसके बाद we have a lattice centricity. Centricity क्या होगी? c over a. C by A. Next we have lattice rectum. Length क्या देते हैं ना? Length of lattice rectum. This is equal to 2b square by a. 2b square by A. टू बी स्क्वायर बाय. तो lattice rectum क्या होगा? The line which passes through this focus. ठीक है, this is lattice rectum. Any doubt in this type secant? कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो. तो समरी चेक करें फिर. यहाँ फोकस प्लस माइनस सी था. अब जो फोकस हो जाएगा दैट इज 0, प्लस माइनस सी. सेंटर इज एट द ओरिजिन. वर्टिसेस plus minus a. Eccentricity remain the same.
Length of lattice rectum. तो ये भी सेम. ये भी सेम है. इक्वेशन और ट्रांसवर्स एक्सिस में चेंज आ जाता है. ट्रांसवर्स एक्सिस, ये एक्सिस इक्वल टू 0 हो जाता है और इक्वेशन और कॉन्जुगेट एक्सिस में चेंज आ जाता है. कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर इसमें हम चेक करते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्योंकि वो y एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है तो कोऑर्डिनेट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं. सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? इन दिस वन 6 एंड 7 पॉइंट में, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस अब y एक्सिस पे आ गया. सेकंड थिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाइपरबोला के जो फॉर्मूलेस हैं उसको एलिप्स से रिलेट करके लर्न कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया तो आपको फॉर्मूलेस याद हैं. एग्जाम में जब आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा आप जो कंफ्यूज होंगे दैट इज इन द फॉर्मूलेस ऑफ दिस वन कोनिक सेक्शन. उसमें भी एलिप्स एंड हाइपरबोला. तो एलिप्स लर्न कीजिए. बेटर है कि आप अपनी नोटबुक में एक टेबल फॉर्म करें, फॉर्मूलेस लिखिए आप एलिप्स के, सेम पैरेलली हाइपरबोला के फॉर्मूलेस, और रिलेट करिए. ठीक है, ऐसे नहीं करना है पहले आपने एलिप्स लर्न कर लिया फिर उसके बाद हाइपरबोला सेपरेटली लर्न करें, ऐसा मत कीजिए. एलिप्स लर्न कीजिए फिर हाइपरबोला के फॉर्मूले उससे रिलेट करके लिखिए, तो एग्जाम में याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, ओके, सो नोट डाउन दिस, फिर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. डन सर. ओके, गुण एंड प्रथम नोट कर लिया, स्टार्ट करें नेक्स्ट. Yes, sir. Yes, sir. Try this question. Find the coordinates of the foci Tell me the answers.
सर मैंने आपको भेज दिया था। ओके युवराज, मैं देखा नहीं। सो आ गए सारे। ओके ओके, सो फोकस जो आपने फाइंड किया है, फोकस इज 0, +, -5। 0, या +, -5, 0, which one is correct? ये टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है ना, क्योंकि टाइप फर्स्ट में x² / a² होता है माइनस। ठीक है प्रथम, यस सर। तो y² / a² माइनस x² होता है। नाउ व्हाट इज वर्टिसेस? +, -3, 0। +, -3, 0, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? सो 5/3। 5/3, this is c/a, so c/a is 5/3. Okay, length of lattice rectum? सो 32/3। 32/3। अच्छा अच्छा, ठीक है युवराज, कोई इशू नहीं। ओके, सो आई गेस सबका आंसर सेम होगा। गुण, युवराज? यस Yes, सर। sir. ओके, then we will start next सो question. एक और बार बस वो बता दो टाइप 1 और टाइप 2 वाला डिफरेंस की। ये वाला टाइप 1 कैसे है? हाँ प्रथम, इसमें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई इशू नहीं आता। एलिप्स में तो फिर भी हमें चेक करना होता है। देखिए, दिस इज टाइप फर्स्ट एंड दिस इज टाइप सेकंड। ठीक है, सो टाइप फर्स्ट में x² पॉजिटिव होता है, टाइप सेकंड में y² पॉजिटिव होता है। साइन का डिफरेंस है। प्रथम क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द equation of the hyperbola with focus +, -3 and vertices 0, ±। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ओके, ये टाइप फर्स्ट है या सेकंड? सो सेकंड। टाइप सेकंड। बिल्कुल ठीक है। सो इसका होगा y² / 11, नहीं √11/2। √11/2, इसका मतलब 11/4। यस सर। माइनस सो x² / 25/4। माइनस 25/4 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है पता, यस सर। इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4y² / 11 माइनस 4x² / 25 इज इक्वल टू 1। इज करेक्ट। यस सर। Gun and Yuvraj, same answer? यस सर। Okay. सर जी युवराज? एक मिनट जी सर, इसमें b² हमने निकालना है ना, क्योंकि हमें c दिया हुआ है।
तो c दिया हुआ है और a दिया हुआ है हमें ये गिवन है। ना सर, तो हम b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 9/11/4 तो सर 7/2 आ गया। ये कितना है? 36 36 माइनस 11 इज 25 है ना? ओ 25। ओके सर, अच्छा मैंने होल रूट ले लिया सिर्फ 11 की जगह, इसलिए गॉट इट सर। ठीक है, ओके देन ट्राई नेक्स्ट वन। Next question is find the equation of the hyperbola. Find the equation of the hyperbola where r 0 comma plus minus 12 and the length of the lattice rectum is 36. ठीक है, for here this length of the lattice rectum is this. ये type first है या second है? सर सेकंड। टाइप सेकंड। Type second. ठीक है। हेलो, हाँ नमस्ते। क्या हाल है आपके? जी, Gun, Pratham and Yuvraj, what's the answer of this? सर एक इक्वेशन आई है a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। Find the value of a. सर a की वैल्यू -24 और +6 आ रही है। Okay, ठीक है युवराज, A B C can't be negative. ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सर +6 हो गई। +6
सो ए जो है आपका आ गया +6, आंसर बी हमारा हो गया क्या कहते हैं 18a अंडर रूट, तो सर 18 into 6 का रूट। सर बी इज 108 रूट। ठीक है युवराज, बिल्कुल b is under root of 108. So equation is y square by a square minus x square by b square is equal to y square by तो y square upon 36 minus x square upon 108 is equal to 1। is equal to, बिल्कुल ठीक है। गुण एंड प्रथम सेम आंसर है। सो मेरा इस Yes, वाले sir. क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ओके सो एक बार एक्सप्लेन कर दो। in this case focus is this, so c is equal to 12 and the length of lattice rectum is 36. It's mean 2b square by a, this is equal to 36। 36. b square हमारे पास आ जाएगा, this is equal to, this is 18, ठीक है। We have this relation that c square is equal to a square plus b square, but the value 144 is equal to a square plus in place of this we can write 18, so we'll get 8 square 18a minus 144, ठीक है। Now इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। This is 248 to 16. ये हो जाएगा सर 24 और 6 आ रहा है। जी -6 से -144 is equal to 0. So you will get a plus 24 minus 6 a plus 24. This is equal to 0. So we get a is equal to 6 and minus 24. So negative reject हो जाएगा, a b c can't be negative. So we get a is equal to 6. a 6 हो गया तो b कितना हो जाएगा? b is equal to b square is equal to 108. ठीक है प्रथम, यस सर। ये टू वैल्यूज आ गई। पुट दिस इन द इक्वेशन, देखिए सेम इक्वेशन आ रही थी। हाँ सर। ठीक है, ओके, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। अब होमवर्क इज अप टू एक्सरसाइज 11.4 प्लस मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस भी ट्राई कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ 2-3 खत्म है जी युवराज। सर, कोनिक खत्म हो गया। कोनिक कंप्लीट हो गया, इतने टॉपिक्स हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ मिसलेनियस। कौन सा कर रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर युवराज मैं अभी बताता हूँ। आई गेस लिमिट्स करेंगे या प्रोबेबिलिटी या स्टेट्स। सर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स कर लेते हैं, 10 मार्क का आ रहा है, सबसे हाईएस्ट वेटेज है। का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। सो ठीक है, लिमिट से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, अच्छा ओके, तो अभी हम ये ऐसे करते हैं, मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो होमवर्क होंगे, ठीक है। बट कल तक प्लीज ये कर लिएगा, ठीक है। ओके गुण, अभी हम थोड़े से प्रीवियस टॉपिक्स कर रहे हैं, पैराबोला। सो आई गेस आपको समझ में नहीं आएगा तो आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। होमवर्क इज एक्सरसाइज 11.4, कल तक ये प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। फिर कल हम न्यू चैप्टर करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे, और जो आपका मिस हुआ है वो फिर प्लान करते हैं कैसे हमें कवर अप करना है। Okay, sir. और आप चाहें अगर पैराबोला का कुछ बेसिक आइडिया है तो आप वेट कर सकते हैं। कुछ है बेसिक आइडिया ऑफ पैराबोला?
नो सर। कोई इशू नहीं है। आप एक्सरसाइज 11.4 कल प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। ओके सर। ठीक है, फिर चलें। थैंक यू सर। ओके, प्रथम एंड युवराज प्लीज कल तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर is at a distance of 5 centimeter from its vertex if the mirror is 45 centimeter deep. Find the distance AB. ठीक है, फिगर भी गिवन है इस क्वेश्चन में। So this is your parabola. This. The focus of a parabolic is at a distance of 5 centimeter from its vertex. So इसका मतलब हमें ये given है, this is 5 centimeter. ठीक, वो कह रहा है कि if the mirror is 45 centimeter deep. Deep का मतलब है this is a mirror, तो depth का मतलब है this one. स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो डेप्थ है that is 45 centimeter. ठीक है, you have to calculate the distance AB. इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है this one. This is A. This is A. This is. First of all, tell me what is the equation of the parabola. बताइए please. Sir, y is equal to 4, y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4x. बिल्कुल ठीक है. What's the value of A? A is what? Sir, a is sir 5, 0, 5. A is 5. तो y square कितना हो जाएगा? 5 4 20 20x. Yes, sir. मीटर. ये क्लियर है? जी सर. ओके, सो इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है, अब ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है दिस इज 45, तो हम कह सकते हैं कि ये 45 हमारा। यस सर. नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट हम वाई ले लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको ऐसा कहते हैं y1 ले लेते हैं। क्लियर हुआ? दिस इज y1। तो ये जो आपका पॉइंट है दिस लाई ऑन दिस पैराबोला, हाँ जी सर. It satisfied with position of सेटिस्फाई करेगा। सो पुट सर x 45 डाल देंगे और y को y1 डाल देंगे तो उससे आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 45। ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। क्लियर हुआ इतना?
जी सर, तो वो 60 हो जाएगा प्लस 60 हो ये जाएगा। जो कंप्लीट है दिस इज 30, ये भी आपका भी 30 हो गया, कंप्लीट ए भी हो गया 60 is equal to 60। ठीक है, सो प्रथम क्लियर हुआ ये? यस सर। प्लीज नोट डाउन दिस। डन सर। ठीक है, सो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टार्ट द मिसलेनियस। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, सो आई गेस आउट ऑफ 8 5 तो हो जाने चाहिए। ठीक है, और जो नहीं होंगे वो कल हम